28% of the electorate that goes to the polls in the first two phases of voting in Uttar Pradesh, in western Uttar Pradesh, consists of the Muslim voter, evidently making the Muslim vote critical in deciding electoral outcomes. In India Matters this week, we look at the set of issues that influence this Muslim voter. Despite the popular perception, the fact is that the Muslim vote is not monolith. On the basis of my own field work in different areas of Uttar Pradesh, I found that the tendency of consolidation of Muslim vote is definitely much stronger in those areas which have recently witnessed either communal riot or some other similar incidents that induce or promote insecurity. Nadeem Hasnain, a professor of anthropology at Lucknow University, argues that the Muslim voter thinks from two paradoxical frameworks. One is universal, tied to caste, ideologies, candidate allegiances and local dynamics. When this framework dominates, the Muslim vote fragments dramatically. The other ties the voter to his or her identity as a Muslim minority, where the need becomes to safeguard this identity from threats. In polarized elections, this framework often dominates and Muslim voters rally together to defeat the BJP. Reporting from some of Western Uttar Pradesh's key constituencies, we look at how this interplay unfolds on the ground. Saharanpur, said to be named after Sufi Saint Shah Harun Chishti, was given by Akbar as a Jagir to Raja Ranbir Singh, a Jain merchant who turned it into a prosperous settlement, attracting crafts families from neighbouring regions. Saharanpur is still fertile, still known for its wooden craftsmanship, famous for the Darul Uloom, one of the world's most important Islamic seminaries, but not one that dictates voting patterns in any significant measure. 35% of Saharanpur's voting population is Muslim. And at election time, Saharanpur is keenly watched as its volatile politics have considerable influence on adjoining areas. It also has high-profile figures who draw national attention, like Imran Masood, Vice President of the Congress, cast in the mold of a firebrand radical Muslim leader who sees this as his political turf. We meet Imran at his home in Nagpur, which is the assembly seat he's contesting. Imran Masood hit the headlines in 2014 when he was arrested for a hate speech against Narendra Modi, an image he wants to shed. बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरा इस तरह का ना तो मिजाज है और ना मेरी इमेज ही इस तरह की है जो पोर्ट्रेट की गई। क्या वजह थी कि आपने इस तरह का नहीं, वो हमारा देखिए, हमारे यहाँ लोकल जो भाषा है वो बड़ी हार्ड है। वो सभ्य समाज के अंदर थोड़ा सा उसको बुरा समझा जाता है। लोग हमारे यहाँ थोड़ा सख्त बोलते हैं, खड़ी बोली है। उसी के अंदर इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण हो गया और वो मैं समझता हूँ गलत था, वो गलत है। Ironically, Imran, whose image is of a radical player, is now critical of a new entrant to Uttar Pradesh's election ground, Owaisi and his MIM. ओवैसी साहब की जो ज़बान है वो वही ज़बान बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। तो ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के लोग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनसे दोनों से समाज को नुकसान है, इनसे बचना चाहिए। Imran Masood left the Samajwadi Party to join the Congress in 2013, a party that has given him immense power to influence ticket distribution in this region, which includes one seat for his brother. राहुल जी देश का भविष्य हैं। देखिए, विकास कम चेहरा अखिलेश यादव का है। साहब, लेकिन 2013 में आपने कहा था कि अखिलेश जी को मुजफ्फरनगर राइट्स के लिए माफ नहीं करना चाहिए। देखिए, राजनीति के अंदर कभी भी एक जैसी स्थिति नहीं रहती। परिस्थितियों के अंदर समय के ऊपर निर्णय की समीक्षा की जाती है। The Congress is contesting 5 out of Saharanpur's 7 assembly segments and counting on Masood's political prowess in this region. But Imran faces challenges from many quarters. First, from within his own family. His uncle Rashid Masood, once a prominent Congress leader, now with the Samajwadi Party, is fielding his own son. The Gujar community, a sizable part of Saharanpur's population, is also angry with Imran Masood's ticket distribution, accusing him of sabotaging tickets to Gujar candidates like Mukesh Chaudhary. मैं आपका हूँ, टिकट तो मुकेश का ही कटाई, फिर नहीं रहा, मेरे साथ बता तो दो। जिस बात पे नाराज है भाई, पार्टी का निर्णय को मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन गठबंधन के अंदर कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। Then there is a challenge from the Bahujan Samaj Party, which has a traditional hold over 2 seats in Saharanpur.
The BSP also has a prominent Muslim candidate, Haji Iqbal, who is contesting Saharanpur's Behat Assembly segment against Masood's candidate Narendra Saini. Linked to the lucrative mining industry, Haji Iqbal also runs a massive university here. ऐसा है कि जहाँ तक इमरान मसूद की बात है, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में एक विवादित बयान दिया और उस बयान की वजह से मीडिया ने हाईलाइटेड किया। उन्होंने हमारे अगर पश्चिम की या जनपद सहारनपुर की बात करते हैं, कोई विकास का एक भी काम नहीं किया है। इमरान मसूद का मुझे लग रहा है कि वो अपनी सीट भी नहीं निकाल पा रहे। But the real challenge to Masood is the one that comes from within the Congress. In Saharanpur rural, a man denied the Congress ticket is now fighting as an independent. Saad Ali Khan, from an old and respected political family, accuses Masood of blocking his chances. I think internal party politics and local politics came in between that, and I was a short winner, and I think Mr. Imran Masood somewhere saw me as a threat, and that's why I was denied a ticket. In Chatka village, Saad supporters are eager to point out a poster from the time Saad played an important role in Rahul Gandhi's Khat Sabha here. एक ही आदमी था यहाँ से कैंडिडेट, जिसे तेली गाड़ा हर बिरादरी का वोट पड़ेगा, अब हिंदू भी वोट पड़ेगा। भाजपा का कैंडिडेट यहाँ कुछ वोट नहीं ले जाएगा, हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं। यहाँ तो एक साद अली का नाम है, नारा पूरा साद अली का नाम आ रहा। Saad in his campaigning has made a concerted thrust to reach out to Muslim castes like the Telis, who feel neglected as Muslim political representation in this region usually comes from the Gadas, a Muslim landowning caste that Imran Masood belongs to. As is evident, caste divisions, internal factionalism and fierce contests between multiple Muslim candidates play out in each of Saharanpur's assembly segments. These should demolish any notion of a monolith Muslim vote. But while the Muslim vote may not be a monolith, Muslim identity is a strong factor that can lead to community consolidation. That is an electoral reality, point out analysts tracking Muslim voting patterns. ये जो मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाना शुरू हुई है, वो भी 92 आफ्टर डेमोलेशन ऑफ बाबरी मस्जिद ऐसा लगता है, इसलिए कि बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन एक टर्निंग पॉइंट है, जिसके बाद मुसलमानों में पॉलिटिकली अवेयरनेस और पॉलिटिकली यूनिटी बढ़ी है। मुसलमान में भारतीय जनता पार्टी को लेके एक एग्रेशन है, उसके पीछे पहला टर्निंग पॉइंट है बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन, दूसरा है गुजरात राइट, इसी के अलावा गौ हत्या और इसके नाम पे जितने भी सारे या बीजेपी के मौजूदा लीडर्स की वो बेलगाम ज़बानें हैं। अब जहाँ सेकुलर पार्टियों की बात आ जाती है, तो मुसलमान सबसे पहले ये देखता है, जो आम मुसलमान है उस एरिया का, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसकी सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी से है और वो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, तो एक बड़ा क्लस्टर उसके फेवर में जाता है। A consolidation behind the Samajwadi Party and Congress alliance is what the SP candidate from Saharanpur city is counting on. On the night we filmed with him, Sanjay Garg is at the home of Gul Mohammed to announce the defection of Gul Mohammed from the BSP to the SP. इसीलिए छोड़ा, मुझे उसमें बहुत घुटन हो रही थी और वोट तो ले लेते, मेरे कोई काम नहीं करे थे, ना कोई मैयत में आया था, ना कोई शादी में आया था। मैं Garg's task is to ensure that the SP Congress alliance is seen as the strongest bid to counter the BJP, which is where leaders like Imran Masood come in useful. Aggressive emotional rhetoric that rallies Muslims on issues of identity can help consolidation. The greater the threat from the Hindu right, the greater the need for Muslim politicians who are seen as radical leaders able to rally their community. This is what leads to a higher pitch of communal competitive politics amongst Muslim candidates. Nowhere is this best illustrated than Sambhal, which also goes to the polls in the second phase of voting in Uttar Pradesh. Its 65% Muslim population ensures that candidates here use the fear of the Hindu right as a center point in their explosive speeches. Election time in Sambhal means frenzied activity that goes into the early hours of the morning. The dominant community here calls itself Turk Muslims and claim descendants from Mahmud Ghaznavi. The lanes around Deepa Sarai are known for its political culture of fiery speeches and public meetings that go late into the night. हम ये चाहते हैं कि यहाँ से माइनॉरिटी का ही कोई आदमी जीते। सर, ये बीजेपी में कट्टरवादी तो बीजेपी में बहुत बड़े हैं। हम जो है शफीकुर रहमान बर्ग को जो है तरजीह देते हैं। मुसलमानों की जब भी बात आती है तो वो बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा हिस्सा लेते हैं और मुसलमानों के हित में बिल्कुल खोल करके बयान दिया करते हैं। This is the stronghold of Shafiqur Rahman Barq from the Turk community, who's fielding his grandson Ziaur Rahman from Owaisi's MIM.
which for the first time is contesting all 403 seats in Uttar Pradesh. Further into the night at the Barat Ghar, yet to be fully constructed, crowds gather to show their support for a man who at 86 has dominated Muslim politics in this region for the past 4 decades. A 4-time Lok Sabha member in 2009, Park left the Samajwadi Party for the BSP, returning to contest the 2014 Lok Sabha election on a Samajwadi Party ticket. मुलायम जब ये बुनियाद डाली थी समाजवादी की तो मैं मुलायम सिंह के साथ था, लेकिन हमारे साथ समाजवादी ने भी धोखा किया। खुल्ला इकबाल महमूद और उनके घर वाले, उनके साथी बराती सब मिलके मुझे हराने की कोशिश कर रहे थे। Park's rivalry with Iqbal Mahmood, known as a Nawab here, goes back a long way and has frequently split the Samajwadi Party in this region. Park says he will ensure his grandson will win on the MIM ticket. असदुद्दीन ओवैसी के वालिद सलाउद्दीन ओवैसी मेरे साथ MP रहे और मैंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का आई वाज कन्वीनर, तो उसमें भी उन्होंने मेरे साथ काम किया था। उनके इंतकाल के बाद में ये आ गए, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि चाचा हमारी आपके ख्यालात जिस टाइप के हैं हमने सुने हैं पार्लियामेंट के अंदर, मैं चूँकि कौम की खिदमत करना चाहता हूँ।